Say It All with Iffat Omar. Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Iffat Omar. आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवा रही हूँ उनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या शोबिस इंडस्ट्री की जो पीक है, ज़ैनत है कामयाबी की, वो तो हॉलीवुड ही है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन पाकिस्तान में शायद वो वाहिद ही ऐसे एक्टर हैं जो ना ही सिर्फ वहाँ तक पहुँचे बल्कि उन्होंने वहाँ पे बहुत कामयाबी भी हासिल की है। जी हाँ, हॉलीवुड में भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जब उनको मौका मिलता है वो ज़रूर वापस अपने वतन लौटते हैं और वहाँ भी अच्छा काम का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। 3 जनरेशन से वो इस फील्ड में हैं और हर जनरेशन ने अपना भरपूर हिस्सा हमारी इंडस्ट्री में डाला है। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली फरहान ताहिर की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो फरहान। Thank you for having me, really. कैसे हैं आप? Home. नहीं, I'm doing really well. गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ, but the rest is good. सबको पता है आप क्या योर बैकग्राउंड 3 generations इन आर्ट और इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन आप तो हॉलीवुड ही पहुंच गए यार। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल I mean, ये बड़े बड़े नाम ना, I stand on the shoulders of giants. These are giants really. मैं गया था, मैं तो पढ़ रहा था and then I started acting and stuff, और मुझे थोड़ा सा ना एक ये ख्याल ज़रूर हुआ कि because यहाँ पे जनरेशन से एक ताल्लुक़ है, so if I get into it, would I think that this was because I have like this lineage, or am I doing it on my own? So क्या पता चला? So पता ही चला कि वहाँ पे करने से at least जो मुझे ट्रेनिंग करनी थी, जो कुछ भी करना था, I did it on my own. So it was just like, I think at that stage it was important to me. You know, you evolve as you go along, but at that stage it was important for me to figure out that am I doing it because I have some craft, or am I doing it because my parents have been part of this? And so I got the chance. Yeah. लेकिन अगर आप कामयाबी को गेज करें तो इससे बड़ी तो यार कोई बात नहीं है ना। इवन इंडिया से भी बड़ी बात है, हॉलीवुड ही पहुंच गए और वहां पे भी कोई एवं ही नहीं, मतलब यू हैव डन बिग रोल्स। नहीं, I've been very fortunate, but लेकिन उसमें ये है कि I don't think so, इतना तो कोई, मतलब इंडियन एक्टर भी अब कुछ 3-4 बहुत बड़े निकले। हमारे सब कॉन्टिनेंट से इतनी कामयाबी in those days, I think it's only you. Yeah, I mean, very few people, and you know, and I'm fortunate. I'm very fortunate. But I will say, जो कामयाबी मिली ना, उसके लिए the amount of work that I had to do was also, you know, it was not कि मैं गया और एकदम से लोगों ने कहा कि जी ये देखो क्या चीज़, तो नहीं हुआ ना. But I mean, I had to work on it. I went to school for it. I got my masters in it. I worked for a repertory theatre for many years. So it's been a journey. It's been a journey. Went through the whole exercise कि जैसे सब करते हैं. हाँ, वो भी किया. मतलब I was a waiter. I drove a cab. I did executive. I mean, जो वो सारी struggles जो उसके साथ होती है ना, वो they also went on. So it was not like कि पहुंच गए एकदम से भाई सब ने कहा कि जी क्या चीज़ आ गई है. लेकिन ये struggle बहुत लोगों ने की होगी ना फरहान, बहुत लोग चाहते हैं, गए भी होंगे, try भी किया होगा. So what was different in you? I don't know. पहली तो चीज़ ये थी कि when I wanted to do it, I made kind of a mental list कि these are the things that people can say no to me about, you know. And in those things, everything is in there. Like, you know, I mean, can I do an accent is one of them. Can I do Shakespeare? Or can I do Chekhov? Or, you know, I mean, people can also say no because of the color of my skin or my religion. Particular roles रह जाते हैं. वो भी आ जाते हैं ना, you know. So I needed to know कि अच्छा कौन सी चीज़ें जिस पे ये कहेंगे कि यार not because of this. Okay. So then what I started to do was that, okay, what are the things that I can change where I'm on an even field? All right. Okay. So if they say that can you do Shakespeare, I can do Shakespeare. I've done it. I've played like Macbeth, Richard III, Othello, Oberon. You know, so I mean, I've done that. Okay, I'm on an even playing field. ठीक है.
If they say if I can do accents, I've done American, Arab, Persian, Pakistani, British. So I can do that, right? I mean, I got training and all that. If they say, you know, can you move, can you do combat, I can do all of that. So I'm going to even... The things that I don't want to change is the color of my skin or... तुमने glutathione नहीं लगाया? नहीं, मैं ठीक हूँ ये सब, ये बहुत लगाना पड़ेगा. You are very handsome. नहीं, but plus बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा. So, the things that I can't change, I don't think of them as weaknesses as others might describe them. I think of them as uniquenesses. Exactly. You know, I'm comfortable in them. I will engage you in a conversation about them, and I will try to not be combative because I want to have a conversation. Yeah. I will try to find a constructive way for as long as I can. As you can. Right? So my point is कि ये सब कुछ जो है ये हुआ, and I'm so fortunate ये हुआ, लेकिन it took a lot of work, and it took sacrifice, and it took hard work. You know, it's hard work. And so वही बात है ना कि अगर आप बिल्कुल बीज बोने से स्टार्ट करो, फिर ही दरख्त निकलता है. आप वो कोई भी प्रोसेस छोड़ नहीं सकते, जंप नहीं मार सकते. और उसकी बहुत वैल्यू है. आप करते हो ना तो आपको थोड़ी सी वैल्यू भी आ जाती है. Yeah. You don't feel entitled. And you have to give something, you know, extraordinary to be extraordinary. Yeah. कि देखो मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी. So you know, so then आप अपने उस पे क्राफ्ट पे काम करते हो, आपको तश्तरी में ये जो है वो आपको पेश नहीं किया जा रहा. नहीं, कोई भी नहीं. ये सिर्फ वो होता है फिल्मों में ही कि मैं सड़क पे चल रहा था और मैं डिस्कवर हो में खड़ा था और ये नहीं वो कोई और होंगे भाई, हम नहीं थे वो सिर्फ मॉडलिंग की वो होंगे जरूर होंगे. So anyway, so it was a journey and no regrets. I feel अब्बा ने मुझे एक बात कही थी which I love. He said कि मुझे नहीं पता बच्चे कि तेरे अंदर टैलेंट है कि नहीं है, तो टाइम और लोग बताएंगे. अब ये शुरू की बात है. But he said something which I really love, and he said, you know, in this business, success and failure both can ruin you. Yeah. If you're not grounded. Yes. You know? So anyway. चढ़ते चढ़ गई ना. चढ़ गई तो फिर चढ़ गई. And I can actually, I think we are meeting for the first time, and yes, you are so grounded. Well, thank you. Yeah, you are. Thank I mean, you. जितना सक्सेस आपने देखा है, पाकिस्तान में कम ही लोगों को इतना सक्सेस मिला है. माशाल्लाह. अच्छा, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फील की? हाँ, होती है. वहाँ भी है. होती है. और कुछ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए अच्छा उसमें भी ना वी हैव टू बी सोफिस्टिकेटेड कि हम डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. कई दफ़ा डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन और नॉन इन्फॉर्मेशन, एंड देन देयर इज अ सेगमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रेजुडिस. ठीक है. If you can separate these things, you can have conversations about the non-communication and the miscommunication. The ones who are being prejudiced, those are people जिसके बारे में कुरान लिखा है कि इन पे कुफ्र डाल दिया. उनसे आप you can't, even if you engage, that engagement is not gonna do too much, so you should be smart about that. उनसे डील करने का और तरीका. किसी का गुस्सा नहीं. हाँ. इनसे डील करने का और तरीका. इन लोगों से डील करने का तरीका ये that you engage them in conversations. You try to make sure that अच्छा शायद हो सकता है कि इस दफ़ा they might not come your way, लेकिन आप उनके दिमाग में कीड़ा तो डाल दिया है ना. अगली दफ़ा जब वो करेंगे आपके साथ या किसी और के साथ, you might surprise them because वो preconceived notions तो हैं ही. नहीं है. ठीक है. तो so that's how I look at it. So जब discrimination होती है, I go okay, what is causing it? And I try different ways to get to that place, and then I go, oh, misinformation, oh, non-information, oh, just prejudice. ठीक है. So then you can navigate and you have your your own way to deal. Then I have exactly. Then I have exactly. बड़े चालाक हो भाई. Survival है बाबा, survival है क्या. अच्छा, अब मतलब क्या मैं नाम लूँ, from Star Trek to Iron Man to मतलब हर तरह का कैरेक्टर किया. यू प्लेड अ वेरी सेंसिटिव रोल. अभी एक वो जो फादर का रोल किया है, और फिर हर तरह की, जिसे कहना चाहिए ना, हर तरह का रोल अब करके देख लिया आपने. पर एक सुपर हीरो और या सुपर विलन,
दैट इज जो आपके ऊपर एक छाप लग जाती है ना, मतलब वो छाप लग जाती है बिकॉज यूजुअली जिस तरह का रोल होता है इट्स so much bigger than life. bigger. It is like larger than life, and you have to do it. And you have to bring kind of that theatricality to it, but and nuances of every character, and yet keep it within that relatability. Yes, exactly. Yeah, right. Yeah. So वो character रह जाता है दिमाग में. And plus और इस तरह की कहानियों में because the stakes are so high. वो ये नहीं कि तेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, घर वाले शादी नहीं कर, you know, it's not that. इसमें कायनातें उजड़ जाएंगी, दुनियाएं फट जाएंगी, कुछ भी हो जाए, राइट? सो एवरीथिंग, हर चीज जो है ना वो इट्स लाइक दिस वाइब्रेटिंग, यू नो, थिन वायर. हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स व्हाट डज इट. नहीं तो मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ कि जब ऐसे रोल्स होते हैं जिसपे मतलब हो सकता है कि फिर आप सारी जिंदगी वही करो ना, एक सीरीज ही बन जाए उसकी. एंड हाँ, वो कम से कम लाइक जैसे जेम्स बॉन्ड, जब तक जेम्स बॉन्ड कर रहा है, हाँ, वो और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं कर रहा. नहीं, ये मेरा और मेरे एजेंट के दरमियान वी हैव अ पैक्ट. वो ये है कि जब हम किसी किस्म का भी रोल 3 दफा से ज़्यादा करें ना, तो वी नीड टू चेंज इट. अच्छा, ठीक है. एंड होता That's your personal decision. That's my personal decision. And that also includes TV, film, stage. You know, so if अगर मैंने ये बहुत ज़्यादा कर लिया तो I need to switch gears and do something else. Oh. You know. लेकिन अगर कोई बहुत मशहूर हो गया, हाँ नहीं, तो within reason, अगर 3-5 चीज़ें मेरे लिए important होती हैं. कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक्टर्स अच्छे होने चाहिए, या पैसे अच्छे होने चाहिए. मतलब 4 या वो हो जाए या ये हो जाए. ये रियलिटी है बाबा, ये बिल्कुल रियलिटी. यू नीड टू नो कि everybody has a price. Everybody has a price, and you should know what the limit is beyond which you will, no matter what they give you, you will not accept it, right? You should know your limits, and you should know कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो. ठीक है. इनमें से कोई एक चीज मेरे लिए needs to be true for me to consider something. That's why I'm being realistic. That why is money in there? Because यार सारों को चाहिए पैसा. हम क्यों कहते हैं कि जी मुझे नहीं, सबको है. हम आज की खिदमत कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं. हमने बाकी सब कुछ छोड़ के आर्ट की खिदमत कर रहे हैं. ठीक है. तो आर्ट को थोड़ी सी हमारी खिदमत भी करनी चाहिए. हमने बहुत करनी. थोड़ा सा बट्टा सट्टा जो होना चाहिए. अच्छा फरहान, फिर हॉलीवुड से पाकिस्तान, हाँ, टू डू उम्रो यार, क्यों नहीं? Right? देखो, to me the thing is that I at least don't have to compare the two industries. They're two separate industries. I say the same thing about, you know, Bollywood में बहुत अच्छा काम हो रहा है, and they do tremendous stuff. We, and again, this is not ये कोई नफरत नहीं है. We don't need to live in the shadows of another industry. Okay. We need to bask in our own glory. We need to find our own voice. And once we have our own voice, we can experiment with all genres. Whether you want to do Bollywood, do Bollywood. You want to do science fiction, do science fiction. You want to do films about social issues, do films about social issues. Right? I mean, we should find our own voice is my point. So having said that, Pakistan Ana for me is a natural evolution. वो इसलिए because evolution. No, not devolution. Evolution. We're going to stay positive about this. Okay. वो इसलिए कि देखो, since I've been fortunate there, I learned certain things. Okay. If I don't share what I learned, then shame on me. By the same token, if I don't learn from people here, then shame on me. Because we can, अगर compare ना करें तो, you know, things that happen here, the resources are different, the system is different, and the survival is very different than it is over there. So for me to come in with a superiority complex that because I've worked there, therefore this is something less or beneath, that is again shame on me. But that's right? your, you know, that's my personal upbringing, because there's an actor in this industry who's worked abroad. Yeah. तो वो इतने क्रूड हो जाते हैं. नहीं वो हो जाते हैं, and yeah.
Yeah. हम नहीं करेंगे उस पर बात हम अपनी बात करेंगे वो उनकी जिंदगी है हमारी जिंदगी है मतलब फिर ना करो ना यार ना करो और इतना भी ना करो क्या यार मैं बार सुना रहे हूँ मत करो सुन लिया ना यार सुन लिया तुमको हमें पता है और अल्लाह आपको और दे और बहुत दे बस so anyways that's my अच्छा फिर कह रहे हो कि so what have you learned from this industry that because there's no structure, you have to find a way to create your own structure. You can't rely on the structure that is being given to you. हम लोगों को वहाँ पे structure मिलता, ठीक है? We get call sheets, we know 12 घंटे काम करोगे, उसके ऊपर ये overtime है, ये वो है, आपकी facilities ये हैं, ये आपका कमरा है या आपका everything is done, right? Organized. यहाँ पे you have to create, I'm talking from the inside of it. From the inside of it. I know. And you know this, right? Yeah. So you have to create all of that for yourself. और उसमें you have to be balanced and fair, and yet you have to make sure कि आपका system जो वो चले, because यहाँ पे survival is very hard. Yeah. It's very hard. Yeah. So there's that. The other issue is resources. Market छोटी है. Yeah. तो resources नहीं है, yeah. ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि the artists, there's a lot of talent, but the artists don't get the opportunity to explore different genres, which is artists, actors. I'm talking about actors, directors, cinematographers, everybody. So they don't get that opportunity to find those other ways to express something. Tell story. Yeah. So those are problems here. On top of that, to be very honest, there is no support. There's no, I don't see any federal or governmental support. How can they support? Tell me. How can they? Yeah. Very few things. They can make it easy, and I've dealt with it. They can make it easy for us to transact money to the state bank when we are trying to bring productions over here. And people who we hire from outside, we can't pay them from the State Department. Really? Yeah, it takes 6 months to get that approval, 6 to 8 months. और वो भी ये नहीं कि आपने फाइलें What is the reason? That's the red tape. So, they can do that. We could give rebates to cinemas so that there would be more cinemas here. Okay. Give some tax breaks for people to build more cinemas. तो पागल हुए मैं IMF के नीचे टैक्स ला वो कितना रिबेट दे तो वही ना, तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है. So you get what you get. अच्छा चलो कमिंग बैक टू ब्रो यार. अब ये एक ऐसा अफसाना है और एक ऐसी जो हम लोगों ने ग्रोइंग अप पढ़ा है. सो जब हैरी पॉटर भी आई थी, हालांकि मैं तब मेरी बेटी भी हो गई थी, मैंने पढ़ा, आई लव्ड इट, और मैंने एक अपना वर्ल्ड क्रिएट किया जो हर कोई करता है पढ़ के अपनी इमेजिनेशन के. हैरी पॉटर डिडंट डिसअपॉइंट मी, जो मैं सोच रही थी वो. अब ये तिलिस्म होश रबा, अमीर हमजा, इफ्रासियाब, हीरत, सरसर, दियो, पहलवान, परिस्तान, वो जो हमने इमेजिन किया हुआ है फरहान, वो हम देख पाएंगे? अच्छा, सो 2 डिफरेंसेस. एक डिफरेंस ये है कि जब आप हैरी पॉटर की बात करते हो ना, तो हैरी पॉटर हमारे सामने लिखी थी, ठीक है? बिल्कुल सही. हम लोगों को इस बात की इजाज़त थी कि हम उसकी दुनिया अपने दिमाग में उसके मुताबिक बना सकें. ठीक है. ठीक है, मैंने तो उसकी भी बनाई हुई है. वो हमने बनाई हुई क्योंकि वो 600 साल पहले लिखी हुई थी ना. तो मैंने तो मुझे याद है मैं 6-7 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया, इतने से आते थे उसकी कहानियां. तो हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन है. ठीक है. योर जनरेशन, माय जनरेशन, हम लोगों को उम्र याद से एक इंट्रोडक्शन है. हमें पता है कि वो क्या. हमें तो अब तो ये जमाना है कि लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि अय्यार क्या है. ओह माय गॉड, इमेजिन. सो अब हम अय्यार क्या? ओह माय गॉड, आई नेवर रियलाइज्ड दैट. सो वी आर इन दैट. अब मैं किसी से कहता हूं ना कि यार मैं अभी आता हूं दांत मांजने जा रहा हूं, तो वो कहते हैं मांजने, राइट? इट्स जस्ट लाइक मैं दांत ब्रश करके, राइट? आई मीन इट्स अ डिफरेंट टाइम. व्हाट आर यू सेइंग मामा? राइट. सो इट्स अ डिफरेंट टाइम, राइट? तो हम लोगों की एक इंट्रोडक्शन है. अच्छा, एंड दैट इज़ वेरी सीक्रेट टू अस. मैं यार, मुझे मेरे नाना ये पढ़ के, जब मैं 3 साल का था,
he would come home and he would read it to me until I would fall asleep in the afternoon. और अम्मी आती थी कहती डैडी वो सो गया और कहते नहीं कहीं सुन रहा है. Right, so I mean it is literally in my DNA. मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं कि मैंने जिस तरह पढ़ा हुआ है, मुझे बल्कि याद है एक मोटी किताब थी दास्ताने अमीर हमजा, इतनी मोटी. मुझे उसके सारे बाब भी if you remember मेन मार्केट में एक बस लाइब्रेरी थी. हाँ बिल्कुल थी. वो मैंने वहाँ से लाई और फिर मैंने वापस ही नहीं, क्योंकि वो मुझे इतनी पसंद है कि मेरे ख्याल से मैं जब खत्म करती थी दोबारा पढ़ती. मैंने भी 10 दफा को पढ़ी हूँ. ठीक है, तो हम लोगों का ना, हम लोगों की एक फेमिलियरिटी है उस what is, अगर सारा कुछ छोड़ दो, what is उम्र यार capable of? That sensibility of ayar, we know, we understand. We understand it and we know what his capabilities are. See, right? वो कितना दिखाता नहीं दिखाता वो Zambil. वो ज़म्बील है उसके पास, which was Harry Potter's Hermione's tote bag, was the same thing. मुझे जब मैंने हैरी पॉटर देखी ना फरहान, मैंने कहा अगर कभी किसी ने दास्ताने अमीर हमजा बना ली, मैं तो यही सोचती थी गोरे ने, पर अगर वो सेंसिबिलिटीज नहीं समझ सके शायद, तो अब पाकिस्तान ने इतना बड़ा ये जो कर लिया है. हमारी नई ऑडियंस है ना, they don't know उम्र यार at all. From Adams, right? I mean, they don't know it. We have to introduce a character which has capabilities. ठीक है, उसमें एक सुपर पावर, एक सुपर हीरो एलिमेंट है. ठीक है, उसके अंदर एक डिटेक्टिव एलिमेंट भी है. उसमें एक शरारत भी है. ठीक है, वो सब कुछ वो उम्र यार बनता है. फ्लर्ट भी था. फ्लर्ट भी है, सब कुछ. सर के साथ काफी वो रोमांस. हाँ, वो बड़ी चीज था. तो एनीवे, तो ये सब चीजें जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें इस ऑडियंस को, और सबसे बड़ी हमारी ऑडियंस पाकिस्तान में इस वक्त जिसके लिए कोई कंटेंट नहीं बनता, इज द यंग ऑडियंस. एग्जैक्टली. ठीक है, हालांकि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम, बट येट वो स्टैंडर्ड नहीं है. और ये जो लोग हैं ना, इनको क्वालिटी का भी पता है. कंपैरिजन इनको पता है. नेटफ्लिक्स खोलेंगे सामने आ जाएगा, वो अमेज़न देंगे सामने आ जाएगा, तो आप उनसे बकवास नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन लोगों के लिए कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जिस विच हैज some quality that is, which is acceptable and exciting to other people. So anyway, तो हमने what we did was, your original question was कि हमें क्या वो देखने को मिलेगा कि नहीं. ठीक है, हमें उसके elements मिलेंगे. We have modernized the story so that magic and science becomes part of the conversation because we live in today. Okay. So if you just, अगर आप किसी को puff कर दोगे तो वो लोग जो है उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. Okay. उसको it has to be intelligent now. It has to be intelligent. ठीक है, आपको इनको आइडेंटिफाई कराना है पहले. ठीक है, अब वो पुफ और जीनी निकलना जो है, that is like ha to them. Okay. So we need to honor their intelligence, give them some explanations of why certain things happen, which others might call magic, but there might be some scientific. So खैर, तो हमने वो थोड़ा सा मिला दिया. Again, going back to your original question, that if this one does well, that Umro Yar will slowly, this is the origin story of Umro Yar, कि वो बना कैसे था. ठीक है. So those capabilities you will get to see as him acquiring or assuming and getting there. So आपको पका पकाया उम्र यार नहीं मिलेगा. आपका उम्र यार अभी कच्चा है. अभी कच्चा है. अभी in the process. अभी लोगों को समझ आएगा कि ये क्या है, क्या चीज. अच्छा, जो एक्टर्स आप obviously young actors आपके साथ उसमें थे, उनको कुछ आगही थी उम्र यार की? कुछ को थी, जिस तरह उस्मान मुख्तार प्रेज उम्र, he knew it inside out. Okay. He knew it inside out. Some of us did, or some of us got to know it because of that. Okay. So the sensibilities, since the sensibilities, I think the good thing about our set was that people, as you said, we had varied experience. Okay. You know, we had people like Simi Rahil Simi Appa who has like, or Sarmad Sabai, and that's a whole other treasure trove of experience, right? Yeah. So वो है. I really want to see क्या character सबने किया, कौन क्या है. So there is that. I mean, and there are people who are making their debut. लेकिन there was something beautiful on the set that we literally left our egos and our experiences on this side of the door. We came in with whatever the best idea was. If that was possible, that idea won. Okay. And who was the captain actually? Who knew? Asfar Jaffrey is the director. अच्छा, तो how did you find him? Like you worked abroad? Yeah. I mean, so Asfar is a very, बड़ा उसका ना, there's a very dry sense of humor to her. Oh, really? Oh, extremely dry, and you have to catch it.
and if you catch it, he's hilarious. He's hilarious. तो लोगों को कई दफ़ा लगता है कि वो जो है ना वो tense, वो tense नहीं है, वो नीचे ही ना दबे लफ्ज़ों में आपको कुछ कह रहा है. So there's that side to him, but he's brilliant with, I think उसकी असल niche is this kind of a film. Okay, fantasy world. Fantasy world. अच्छा, तो fantasy world हमें नजर आएगा इसमें? Oh God. Fantasy world. That is a challenge. हाँ, there's this other side, especially my character. He is obsessed with demolishing all the yards. Right? That's his. वो कभी we can go into the backstory of it. में तो it was Samri जादूगर, right? है ना? हाँ, हमने लक्का जो मेरा जो character, that's we have created him. Okay. ठीक है, so he's kind of a counterpart to the Ayars. Okay. And then to he's anti-Ayar. Yeah, I mean his loyalty lies with no one but himself. Okay. ठीक है, तो अगर समझो कि वो आफर सयाब और उसमें चला गया ना, तो he'll still be finding his own angle. Okay. He bows to no one. Oh, okay. So वो उसका character. So right? he's a Maha-Ayar. Yeah, he's really right. He's a Maha-Ayar but gone bad. तो वो so you see उसमें वो सारा जो है ना वो the conjuring of things और वो सब कुछ है. Alright. वो सब कुछ है. वो सब कुछ है. आपने फिल्म देख ली अभी? मैंने इसका देखा था rough cut before all the environments were put in. So what do you have to say about it? Give me an honest. My honest opinion for it is that I think it is at par with most of the stuff that we see outside. Really? Yeah. Oh yeah. wow. And I'm saying, I'm being totally honest, right? Okay. Most इसलिए कि भाई जब आपके पास अगर $300 million का budget है तो you're going to do something crazy, yeah. right? Yeah. हमारे पास वो नहीं है. But I think true creativity lies when you have limits. ये तो है. You know? क्योंकि अगर आपको इतना पैसा अगर आप चांदी बना दोगे, हाँ. तो फिर वो क्रिएटिविटी नहीं है. मतलब क्रिएटिविटी के पैसे से कई दफा पीछे मतलब वो कोई फायदा भी नहीं. Look at हीरा मंडी. I mean. Exactly. इतना पैसा. बस वो लग रहा है कि वो खूबसूरत बहुत है. हाँ, बस, है कुछ नहीं बस, उसमें. हाँ. तो anyway, so this में, I think it is on par with a lot of stuff that I see outside. The special effects are all done here. I mean, I loved the trailer. I mean, the trailers I think is really good. Yeah, brilliant. Right? कारने है जो अगले जानदार पे एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है. एक अय्यार का बंदोबस्त किया है. और अगर उसे कोई रोक सकता है तो तुम हो. The trailer is good. I think there is nice. What I also love in it is that women are not damsels in distress. Yeah. They're dames who will put you in distress, right? Oh wow. Right? I mean, so there's like this angle to it कि ये वो नहीं है. You know कि कोई उनको आके बचाएगा या कुछ होगा. They will. नहीं, अयार के साथ अयारने भी थी. अयारने भी है ना. हाँ, तो उसके पास वो भी है, मेरे पास भी है. देव हैं इसमें. Kind of, right? Yeah. So there's that empowerment there. There is थोड़ा सा उसमें science भी है, थोड़ी सी magic भी है. मतलब बहुत potential है इसमें, and I hope and I really want everybody to come and watch this film क्योंकि अगर ये चल गई ना यार. अगर ये चल गई यार तो देखो. हम फिर Netflix पे पहुंच सकते हैं. Yes, ये इसमें वो algorithm है, इसकी जो stunts है that were done by. But it has all the potential it does, for and we got wherever series. where we had gaps. Our stunt team was the same team as Game of Thrones. Wow. ठीक है. हमारा cinematographer जो है, he did Fast and Furious. Wow. Right. So our production designer was from Italy. And I'm not saying कि जी क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, that's why go see it. उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि they're master of what they're and doing. they came over here and that knowledge now exists here. Yes. You see? Yeah. We need to keep bringing all of that here so that we don't have to look outside. Yeah. You know? So अगर there's a given a logic. chance और वही सब कुछ यहाँ भी है जो पूरी दुनिया में है. Where will you want to live and work? सच्ची बता. That's an interesting question. I think on an artistic level, I put no bounds on me. ठीक है, it could be Pakistan, it could be Italy, it could be UK. लेकिन what would be your base? But the base is the thing. Yeah. If everything was equal, no one wants to leave their home. है ना? हाँ. आप कितनी भी कोशिश कर लो, और मैं वहाँ पे बहुत सालों से हूँ. And I've assimilated, I have all of that, you know, my children are cross-cultural, ठीक है, all of that is there. लेकिन, I'll be totally honest,
there is something जो घर की बात है वो घर की बात है ना? हाँ, there's no doubt about that. It's not easy. No, it's not easy. अल्लाह करे हो जाए यार, मैं हो जाए, अब जिंदगी जो ग्लोबल हो गई है, ठीक है ना? हो गई है। So you have that opportunity कि आप कहीं पे भी हो, आपको फिजिकली वहाँ होना लाजमी नहीं है। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस कोई पाकिस्तानी, अब तो हमारे एक्टर्स दे हैव द स्किल, दे नो एवरीथिंग, जैसे सनम एक्सेंट्स भी कर लेती है, यू नो, एंड शी इज इन द मूवी एज वेल। तो इफ दे वांट टू बी इंटेलिजेंट, जैसे इंडियन एक्टर्स हमें अक्सर नजर आ जाते हैं जो यहाँ मेन स्ट्रीम में हैं, जैसे दीपिका वहाँ पहुँच गई है, इवन प्रियंका चोपड़ा है, तो रेगुलरली वहाँ होगी, तो कोई चांस है हमारे एक्टर्स का? बिल्कुल है, पर क्यों नहीं होता? टू थिंग्स। एक ये है कि जो हमारी जो पब्लिक और जो हमारा मीडिया है ना, इट डजंट सपोर्ट अस आउटसाइड ऑफ दिस बबल। ओके, आप इंडिया की मीडिया को देखो, उनका आदमी, आई एम सेइंग कि वो डकार भी मार देना हॉलीवुड में, तो दे गिव इट सम Of course, इतनी बड़ी बात बना देते हैं। And I'm again sure, फरहान, कि जितना पाकिस्तान में आपको लोगों को आपका पता होना चाहिए, मतलब there's certain class, वो आपको जानती है, but शायद masses को नहीं इतना पता। I mean, and that's not my job, right? Exactly. मुझे तो काम करना है। अब जो जिसने देखना है वो देखे, जिसने नहीं देखना होती है ना कि आपने प्राइड लेना होता है और आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, वो अपने लोग हैं ना। अच्छा, एक साइड वो है, ठीक है, that I don't feel that we get enough support here. Okay. ठीक है, we don't get all of that. We get it in this region, we get it, and I understand that. The second thing is कि जब आप यहाँ से एक एक्टर को वहाँ लेके जाओगे ना, I'll be totally honest, यहाँ पे ख़ास तौर पे जहाँ पे जो leads हैं, they become leads because of the way they look and all that has happened. So they've been given a certain level of importance. ठीक है? When you go over there, the truth is you might not get that level of importance initially. And then you have to, you know, go for auditions. तो आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है? आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि यार I'm here, I understand, बेबी मैंने यहाँ पे कोई मार्क नहीं बनाया है, I have to fight like the rest of them for a little bit. Take a few punches, throw a few punches, show a few bruises, have a few scars. ठीक है? तो वो ईगो जो है, that ego, I understand. अब लोगों को एक आदत हो गई है, and वहाँ पे भी है, वहाँ पे A-listers जो वहाँ के A-listers हैं, they're having, you know, they have a whole other reality. ठीक है? यहाँ पे भी जो आपके A-listers हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक तरीका है काम का, उन्होंने अपने सिस्टम बना लिया, everything. आपको वहाँ जाके ये छोड़ना पड़ेगा। You have to start from you scratch. You have to, you know, roll up your sleeves. You have to get into that ring, and you got to duke it out. पर यूं तो नहीं हो सकता ना कि आप बस उतर गए एयरपोर्ट पे और आप कहीं चले गए। वो जो एक सिस्टम है, एजेंट्स एंड एवरीथिंग एंड वर्क परमिट, वो सुना है बहुत मुश्किल है। और मैंने ये बात कई एक्टर्स ने मुझसे ये, you know, we've talked about it कि आप, मैं वहाँ आ सकता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो ज़रूर आ सकते हो, आओगे तो ये चैलेंजेस हैं, and don't come there for a month or 2 months. Come then. Come. You know, put your elbow grease into it, or come with a working visa. For instance, चलो एक शो रील एक एक्टर की है and he's done everything. वो एक एजेंट के पास है, तो can't you get like auditions because of that? Of course, yeah, of course you can. Of course you can. And when you get auditions, और कई दफ़ा ये होता है कि if it's an important enough role, if it's a lead or like something, and they really want you, they will then work on the visa for you. Yes. Exactly. So they do. But that is a chance 1 in 1,000. Really? 1 in 100. Okay. ठीक है? The reason I'm saying that is कि अगर उनको एक एक्टर मैं वहाँ से मिल जाता हूँ, तो उनके लिए चीपर है ना? Yeah. ठीक है? तो फिर आपको वहां पे अपना आपको अवेलेबल करना पड़ेगा ना। You see? तो यहाँ पे हाँ ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, when they really wanted somebody from India or Pakistan, like ओमपुरी, you know, नसीरुद्दीन शाह, यहाँ से हमने वहाँ फिल्म की थी I'll meet you there, so we got कवि अंकल to come and play my father. ठीक है? So we got the visa, we did everything that we could. So you can do that. But that's rare. That's rare. Now that's specific, very
customized choice. The only thing is कि मैं कह रही हूँ कि हमारे एक्टर्स की प्रेजेंस वहाँ पता हो ना. हाँ, नहीं है ना. नहीं है ना. मतलब इंडिया की है. इंडिया की है. इंडिया की है. तो हमारा मीडिया देखो अब everything is social media. ठीक है. That depends on the journalists. It depends on the bloggers. It depends, like जो भी है. I mean, I don't even have like that many Instagram followers. तो मुझे वो नहीं है. Again, it's a new word. और अभी people are learning because अभी तो viral stuff चल रहा है ना. किसी ने जितनी बड़ी बोंगी मार दी है. हाँ, बस उतनी बड़ी बोंगी. मतलब imagine, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती. मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं समझ. तो अभी बदोबद. What the hell यार? ठीक है. 16 million. I mean, I do a health show and I get like 3,000 people. वही ना, right? So I mean, so when you're dealing with that, when you're competing with that, फिर आप कैसे करोगे? Yeah. Right? लेकिन अगर हमारा media and if our journalists are smart enough, if they push these people out, जो हम बार बात करते हैं कि जी हॉलीवुड हमें किसी लाइट में नहीं दिखा रहा, भाई हॉलीवुड को सच्ची जो बात है ना, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है हमें किसी भी लाइट में दिखाने. Exactly. मतलब who are you? इतनी entitlement क्या है यार? ठीक है. हम तो हॉलीवुड को हम भी तो किसी लाइट में नहीं दिखा रहे, तो वो तो नहीं चीख रहे. जब भी दिखाते हैं. ठीक है. तो बेहरा रवि का शिकार और क्या होता था कि नीली आंख वाले बेवफा होते राइट. हम वो करते हैं राइट. तो हमें अपना वो है सब कुछ. बट अगर कोई कहानियां सुने हमें सुनानी है. उम्र यार हमारी कहानी है. यू नो, अगर मैं तो एक और आई एम ऑन अ डिफरेंट किक नाउ. आई वांट टू मेक उर्दू कूल. ठीक है. हम लोगों ने सब ज़बानें बोलते हैं और कोई ज़बान अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश, हाँ उसमें इजाज़त है और ज़बानों के लफ्ज़ इस्तेमाल करने की. लेकिन जब आप सिर्फ उसको अंग्रेज़ी बना के सिर्फ उसमें उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि क्या यू नो व्हेन हाफ अ सेंटेंस लाइक फूड तो कुक हो रहा है ना यार, फूड इज़ बीइंग डन ना यार, राइट. फूड इज़ बीइंग डन यू नो. So वो तो food is being done is all English, ना यार is उर्दू, right? Yeah. So हम लोगों ने अपनी ज़बान की कुर्बानी, अब ईद आ रही ना, अपनी ज़बानी कुर्बानी दे के हमने अंग्रेजी को अपना लिया. अगेन वो है ना कि कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी हमारा. कॉम्प्लेक्स है ना. नहीं आंधी सी तो लोग की कहते हैं ना बोलो ना यार, कोई नहीं. It is not a gauge of how smart you are. It is not, it's but not. it's like again colonization के बाद. Colonization, लेकिन देखो we are still अभी 70-80 साल पहले की तो बात है. नहीं मान लिया, लेकिन देखो अब there's a whole generation जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था. ठीक है. अब Italian knows English but knows his own literature. A Japanese or French know another language but they know own Spanish. They know their own literature. I can bet you if I challenge some people कि मुझे वो 5 उर्दू के राइटर बता दें, गालिब इकबाल उसको छोड़ के. मेरी बेटी को तो नहीं पता. नहीं पता ना. ठीक है. लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? स्कूल पे. नहीं, हम पे यार हमें तो अल्लाह करे इनको अंग्रेजी आ जाए. नहीं वही ना हमने किया है यार, हमने किया है ये सारा कुछ. तो मैं ये तुम्हें भी अंग्रेजी ना आती ना तो हॉलीवुड में कोई नहीं होता. नहीं, वो बड़ी कोशिश, मतलब वो किया ना. मैं समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जरूर पढ़ो इंग्लिश एंड बी good at it. Really good at it. You know, but not at the price of forgetting your own language. There's Urdu is there's such beautiful. Urdu and even Punjabi. अब पंजाबी देखो, सब सारे जो बड़े शायर थे, आप इकबाल, फैज पंजाबी थे ना. उन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की है. पंजाबी इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है. साढ़े लिए है ना. मतलब पठानों के लिए उनकी होगी, सिंधियों के लिए उनकी होगी, या लेकिन जो पंजाबियों को मजा आंदा ना पंजाबी से, जेड़ा गाल देना मजा आंदा ना, वो there's no comparison. So you miss that there. Oh yes, वो तो मैं देता हूँ, उन लोगों को समझ नहीं आती. अच्छा चले, मैं आपसे अब थोड़े से छोटे सवाल. Describe a perfect day for you. Okay. And be honest. No, I'll be honest. So something. It could be like, you know. No. It's something. There's a joke in the house, and then I'll give you the real answer. There's a joke because my kids call me a social introvert. Like I can be very social, but I like spending time with myself. Okay. So there are many weekends when I tell my friends that I'm out of town, and I buy my groceries, I create my food, I listen to my own music, and I don't speak to anybody, and that's a perfect day in one way. It is actually. Okay, so there's that side. Yeah.
Other perfect days, another kind of perfect day is that I can spend with my kids. That's a perfect day. Another kind of perfect day is when I'm doing something artistic that really gets my creative juices flowing. Yeah. You know, When you give your 100%. when you give your 100%, When you know तो आपको पता ही नहीं कि है मैंने कि कर बाहर दिया आज। कर दिया है और मैं उसमें था, पता नहीं वो पसंद आया किसी को नहीं But आया। you yourself are happy. आई एम हैप्पी। उस वक्त मुझे नहीं पता कि दिन है कि रात है कि बाहर तूफान है कि बारिश हो रही है कि सूरज निकला हुआ या कुछ है। That living in that moment is another perfect day. Yeah. Another perfect day is when you eat some good food. You're a foodie, right? Yes. Yes. And you cook yourself. I do. What do you cook the best? I do everything. मुझे cooking is like it's like meditation to me. It is. I like वहाँ पे जब मैं होता हूँ I like लोग जाते हैं हफ्ते भर की groceries लेके आ जाते हैं, ठीक है. I get my staples हफ्ते भर, but I like going to the market, pick my fruits, pick my Farmers vegetables, market. pick Oh, my yes, I vegetables, love pick that. my meat. Talk to the fisherman, talk to the. I like that. Yeah. So that ritual I love. get I you. love that ritual. Exactly. और मैं भी जब जाती हूँ, my daughter is there, तो going to the farmers market is like I know, being in right? heaven. Yeah, it is. Yeah. Okay. सबसे ये कैसा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए क्या होता है, और सेकेंडली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आप किसी को क्या देते हैं? I mean, what's something you admire the most and you like being admired for? If I'm getting this compliment from one of my peers, that's a different kind of a compliment than what you can get from an audience. ठीक है. I think the biggest compliment to me would be that if somebody saw my performance and they thought it was a very fluid performance. Solid to me is it has edges on it. Fluid to me is when you're able to embody something enough that no matter what situation comes, you can find different ways of expressing that. Wow. So that to me is a very high compliment. If somebody gives that to me. But this is like work, right? Yeah. A personal compliment. A personal compliment, I would hope that people find me decently humble. You are. Okay. Yeah. That's not a put on thing. I work on it every day. You do? Yeah, I work on it every day. Because I think I told you this, my father said something to me. You know, he said, मुझे नहीं पता तुम्हें talent है कि नहीं, right? Told me, yeah. So there's that. So I work. So you keep that in mind. So I keep that in mind, and something that I always keep in mind is that when things are going really well, I should take that with grace and humility. ठीक है? Grace is very important. ठीक है? When things are not going well, I should do it with bravery and yet keep my grace and humility. Yes. So I think that's if somebody sees that in me and if they think it's a put upon thing, then I'm sorry, but if somebody really sees it and if somebody recognizes that would be a very high compliment. So what's the best compliment your kids have given you? Or it's yet to be given? No. I think the biggest compliment they've given me is the way they are with me, because I have a very special bond with my kids. And I think the biggest compliment is that they see me as a human. I mean, I have good qualities and I have bad qualities. And you are in good relationship with their mother. Yeah, I'm in a very good relationship with my mother. So I think if they see me as a human being, कि मैं कुछ गलतियाँ भी करता हूँ, ठीक है, I'm human, और अच्छी बातें भी करता हूँ, तो I think the biggest compliment is that we have become friends. Tell me their names and what they are doing. So Lena is the older one. She's 29. Okay. Mashallah. Mashallah. She graduated in mathematics. I know. Oh. And she now works for. I know. Abhi dusra ka bhi sun lo. So she graduated in mathematics, but she's a really wonderful writer. Achha. Really wonderful writer. I mean, all of you are then. Yeah. I mean, one of your brothers who's not in showbiz, he's a writer. He's a writer. Well. He's a writer. Yeah, he's a writer. खा के पैदा किया है ये कीड़ा है ना सारों में, पीछे से चला आ रहा कीड़ा है बहुत पुराना कीड़ा है.
मेरा बेटा जो है he is doing his PhD at Stanford in neurophysics. I don't even know what that means. Yeah. मैं कहता बेटा तुझे पता लेकिन he is a wonderful guitarist. Jazz guitar, he plays jazz guitar. So I mean he's very good at it. So दोनों में कीड़ा है. So the mother is like also, you know. Marie, my wife, ex-wife was. She was an English and drama major. That's how you met? That's how we met. Oh. You know? She branched off at one point into software and all of that. When अच्छा यार तुम लोग बहुत intelligent हो. नहीं मैं नहीं हूँ वही है. मैं तो कितने समय mature to be a big good actor, you have to be intelligent. No, yes we do. लेकिन मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मैं बिल्कुल I'm an idiot savant, मैं और कुछ नहीं कर सकता. अच्छा बुरा जैसा भी है मुझे जब 6 फुट गाड़ दोगे ना तो तब मैं चुप हो जाऊँगा. You know, just like Marie, you know, went off into software, did all of that, and she was very proficient at it. मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं यही कर सकता हूँ बस. पर जो आप कर सकते हो वही आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि you made it. I made it, and you know, अगर नहीं भी होता तो देखो I made this decision. मतलब खुदा ना से ना बनते तो कुछ और करना ही पड़ता ना. कुछ करना पड़ता लेकिन दिल नहीं भरा जाता ना. चल ना होता तो करना तो पड़ता. करना पड़ता और आप बिल्स पे करने के लिए आप बहुत कुछ करते हो. पापड़ बेलने पड़ते हैं जो ज़्यादा मुझे नहीं कहते कि कैसे कितने पापड़ बेल. भी आ जाती सब कुछ आ जाता. सब वो सब कुछ किया हुआ भी है. So I mean that's not my problem. लेकिन I'm really fortunate that I do what I love. I still think about it. That I can't believe that they're paying me for this. I'm having so much fun. You know, so I mean, और देखो सच्ची बात है जो भी आपका काम है ना आप उसके बारे में अगर काम नहीं भी कर रहे तो 5-6 घंटे और सोचते ही हो. कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आ ही जाए. तो जब 18 घंटे किसी बारे के बारे में सोच रहे हो तो अगर कोई ऐसी चीज़ कर लोगे जो तुम्हें पसंद है तो कम से कम वो जो 5-6 घंटे जो तुमने साथ उसके जोड़े हैं काम तो आएगा. तो मज़ा तो आएगा. रोमांटिक हैं आप? होपलेस रोमांटिक. अच्छा. सो रोमांस में क्या सिचुएशन हो जाती है फरहान की? आई थिंक रोमांस की सिचुएशंस जो है वो बदल जाती हैं. पीपल नीड टू नो दैट, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी डेफिनेशन ऑफ रोमांस चेंजेस ओवर टाइम. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है जैसे पहले कैसा था फरहान? पहले आप जुनूनी तौर पे होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इश्क हो जाता है. यू नो पागल हो जाते हैं 18 साल के. और कुछ है ही नहीं ना आपको दिमाग तो है नहीं सिर्फ हार्मोन्स ही है सिर्फ. यू नो वो एक स्टेज होती है. फिर आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं. डेफिनेशन ऑफ लव चेंजेस एंड इट्स ओके. सारा वक्त वो जो 16 साल के बच्चे वाली लव स्टोरी है ना वो नहीं चलती है. सच्ची बात. और ये समझ भी आपको इस एज में ही आती है. पहले तो समझ नहीं आती. अभी बच्चों को नहीं समझ आएगी. उनको नहीं आनी चाहिए. उनको नहीं आनी चाहिए. एंजॉय दैट. उनको they need to enjoy that. There's no harm in that. At different ages, different definitions have to be dealt with, processed. कि उसमें क्या आपको important है. Those things are important. So what is important for you now? Companionship is very important to me right now. You know, being able to understand each other and the processes people are going through is very important. You know, we are changing physically. We're changing. Yeah. You know, at a certain age, certain things are changing at a different rate than they were before. You know, you're gaining wisdom. There's a plus side to it. And you have lesser time. You know, I mean, you know, I'm still very fortunate that I still run 5 to 6 miles, right? Wow. So you know, I mean, so लेकिन मुझे ये तो रोकिया है. नहीं तो मुझे हाँ तो मुझे इस बात की I fully value that कि यार अभी कर सकता हूँ कल कुछ. I mean, you look amazing. So thank you. So you know, so I mean, so वो change हो जाती है definition. You know, so to me, what is very important right now is sukoon. Yes. You know, sukoon बहुत important है. Companionship बहुत important है. A way to जहाँ आपको ये communicate. फिक्र ना हो कि मैंने अगले को entertain करना है. You know, चुप में भी. एक. If you can share silences, बड़ी बात है. बड़ी बात. You know, how to communicate with each other. There's a different layer to it, and you should honor that. वो एक चीज. So I mean, तो वो चीजें जो है ना मेरे लिए important. चलो बहुत सारी लड़कियां सुन रही हैं. सुन ले. I mean, you know, which does not take place of the passion. Yeah. आपके अंदर वो होगा तो ये चीजें अब ये important है. But unless there's a connection,
या ये तो नहीं कि आ जाओ लेट्स बी कंपेनियंस, ये नहीं होता। नहीं, बहुत टाइम गुजर गया, इतना टाइम नहीं रह गया कि वो फॉर दोज रीजंस। उससे तो बेहतर है आदमी अकेला रहना। बिल्कुल सही बात है, और अकेले रहने का डर भी नहीं होता। नहीं, कोई डर नहीं। इसको सिर्फ खाना मैं खुद एक्सेप्ट करने पकाता की बात है। हूँ, खाना खुद पकाता हूँ, लॉन्ड्री खुद करता हूँ, नहाता धोता खुद हूँ, आई एम टोटली फाइन। ग्रेट। और बंदा खुला है फिर, खुला, कमिटमेंट भी नहीं है। Alright, you have seen both the worlds, और दोनों का कल्चर भी पता है, प्रॉब्लम भी पता है, और रिसेंट जो मैं देख रही हूँ पॉपुलिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, उधर भी इधर भी ये हो रहा है। सो इतने सालों में व्हाट चेंजेस हैव यू सीन, और तुम्हें क्या लग रहा है कि एक माशरा जिसे हम एक सोसाइटी कहते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न कहाँ आ गई है? ब्लेंड हो गई है ना, बिकॉज जब तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, देयर वर बाउंड्रीज इन द सेंस कि आप ख़त लिखते थे, वो ब्लू रंग का एरोग्राम होता था, वो 10 दिन में पहुंचा था, सबसे तेज़ मेल वो होती थी। मुझे याद है सब। एक ज़माना था आपको ट्रंक कॉल जो है वो बुक करानी पड़ती थी, ठीक है, 3 मिनट की, 10 मिनट की, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। सो अब कल्चर्स में ना देयर इज सो मच कम्युनिकेशन, तो इतनी फैसिनेशन और इतना वो नहीं है। we can, but this certain change के वहाँ पे Trump and so and the white supremacy on rise जो मैं देख रही हूँ, वो भी हो रही है, लेकिन हमेशा से थी, but now they are blatant about it. वो ट्रम्प के आने से ना वो हो गया कि जो अंडरबेली थी ना अमेरिका की, that got exposed. अब हमें पता है कि what beast are we dealing with, ठीक है, but there's also the flip side of it. अब देखो in the US there are pro-Palestinian demonstrations everywhere, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। नहीं हो नहीं रहा, तो वो ट्रम्प के ज़माने में कुछ नहीं हुआ। देखो there's always a swell that happens. एक ज़माना ऐसा था, I remember when I was at Harvard, जो हमारा रिसेप्शनिस्ट था, he was a Palestinian man, and उस वक्त वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, and when I came by, he whispered in my ear because he knew I was a Muslim. He was like, "Do you want to go to the pro-Palestinian rally?" Maybe I want. Right? एक ज़माना वो भी था, which was not that was not that long ago, 20 years ago. एक वो ज़माना था. So there are some positive things that are happening. एक ज़माना ये था कि people did not understand this plight of the Palestinian people. Now there are demonstrations, there are people willing to take tear gas and lathi charge and whatever is happening, they're willing to. Yes, by the same token, जो दूसरी साइड है which is the racist, वो नंगी हो गई है, ठीक है। तो अब जो वो एक मिस्टिफिकेशन थी ना अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ठीक है। कितने ह्यूमन राइट के चैंपियन नहीं हो यार, तुम भी साड़ी भर हो सारे, एनजी बने हो ऐसी सारे, वो हमने भी बना दिया था ना, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हमने भी उनको, because we become such Anglophiles or Caucasianophiles or Cockophiles or whatever you want to call them, that we had created them into these beings. सच्ची बात है. Really? It is true. एक अंग्रेज आ जाता है, एक अंग्रेज. Better before. No, I think there is a, we have to get out of it. I deal with them every day. I don't think of them as anything else, but maybe because I've lived there long enough, but I deal with them as people. यहाँ पे गोरा आ जाता है. Anything he says becomes, when he's talking, गोरा अंग्रेजी बोलता है. I still feel that there is, or when there's a foreign influence, we still defer to it. And I think, I don't know why that is. Maybe there is a past history that we are still trying to deal with, or maybe we're too enamored by them. I think we can give people their due respect, but I think, again, I go back to the same thing, that somehow or the other I feel कि हम लोगों को थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं ना, कि हमारी अपनी शनाख्त हम भूल रहे हैं. There's no harm, that's why I say Urdu is so important, because there's no harm in knowing your own language or your own literature or your own people, and also knowing another language. Yeah. I think there's something beautiful to be able to, I have this, and maybe you do it too, I can dream in English, I can dream in Urdu, I can dream in Punjabi. There's something beautiful about that. Yeah, that. But mostly people like me, we translate Urdu in our brains first, and then we speak English. Yeah. But now there's generation coming in which is not even translating anymore, right? Yeah. So I'm just saying that, maybe there's a way
to have your cake and eat it too. एंड यहाँ पे भी अब आप पाकिस्तान का माशरा भी आप देख रहे हो, सोसाइटी आजकल देख रहे हो कि वो हलवे वाला वाक़या हुआ है एंड यू नो क्रिश्चियंस आर बीइंग मैसेकर्ड एंड थ्रू आउट जो कुछ देखा है, क्या चेंज लग रहा है अब की सोसाइटी में एंड ये जो इतना एंगर है? When I was growing up, at least maybe छोटा तो शायद मुझे I didn't feel it, but I felt that there was way more acceptance in us. है ना? Yeah. 70s was like much better. मुझे नहीं पता था कौन शिया है, कौन सैयद है, कौन सुन्नी है. देखो अब हमारे घर में दोनों बसते हैं, ठीक है. You know, हम लोग जाते थे देखने के लिए, जो मेरे शिया दोस्त थे, मुझे पता है कि वो मुहर्रम आया है. हम एक्साइटेड होते थे. हलीम मिलेगी, खीर मिलेगी. So there was celebration. Yes. Yeah. ठीक है, I get it. सच्ची जो बात है, I'm not a religious scholar, but I know this much, that फ़िरक़े और ये सब चीज़ें they're really not part of our religion. अगर आप अल्लाह में बिलीव रखते हो तो that's what's important. अब आप चले जाओगे अगर मोरक्को, वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हाथ नहीं बांधते, ठीक है. आप चले जाओगे UAE या सऊदी, कई दफ़ा लोग यहाँ हाथ बांध के पढ़ते हैं. आप पाकिस्तान इंडिया चले जाओगे, यहाँ हाथ बांध के मारते हैं. तो देखो ये सारी चीज़ें जो ना, differences should be celebrated as long as we understand and honor the bond that we have as humans. Because we lack empathy so much. No? We don't go in other person's shoes and think कि यार जो मेरे लिए इतना important है उसके लिए भी वो उतना important है. ठीक है, तो I mean that's बर्दाश्त नहीं है और ख़त्म होती जा रही है. And I think some of it is that fires are being stoked to keep people so worried and absorbed कि into वो अपने rights ना मांगे. कि हम लोग जो भी कर लें इनको इस काम पे लगाए रखो. I think that's the biggest change and that's the most heartbreaking change. Capitalism है, but लेकिन उसमें देखो जो like you know Christians or Hindus or whatever, the people that we have here, there is a provision in the dream of Pakistan. There is a provision in our flag in Pakistan. It's not a कपड़ा ख़त्म हो गया था तो बाकी जो है वो लठेगा सफ़ेद लगा कर दिया था. So there is an honor. वही बात है ना, जब आप फ़लस्तीन के लिए रोते हो, हम सबका दिल रो रहा है क्योंकि वो बच्चों का तो कोई भी, मतलब वो चाइनीज़ भी हो, वो हिंदू भी हो, कोई भी हो, तो यही यहाँ पे भी तो प्रैक्टिस करो ना यार. देखो ना, वही बात है कि देखो कि इतना मिसाली बनो कि फिर इंडिया पे कहो कि मुसलमानों के साथ जो कर रहे हो गलत कर रहे हो. आप भी तो हिंदू मार रहे हो, फोर्स कन्वर्जन्स कर रहे हो, बच्चियों से शादियां कर रहे हो. वही ना, ये सब कुछ नहीं करो क्योंकि ये इस्लाम में भी नाजायज़ है. ऑफ कोर्स है, नाजायज़ है, ये गुनाह है. ठीक है, तो आप मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन इस बात पर मैं किसी भी आलिम के साथ बैठने के लिए तैयार. बिल्कुल. ठीक है, एंड आई विल कोट आउट ऑफ द कुरान. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स. और ये जो इस्लाम हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है ना, बेहतरीन सिखाया है, क्योंकि उसी से हम अच्छे इंसान बने जो भी आज हम हैं. अगर हम झूठ नहीं बोलते, हम हम्बल हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, It's all because that are the teachings. और जो मुझ में खामियां है ना, I understand कि वो मेरी जुस्तजू है. ठीक है, हाँ. वो मेरी जुस्तजू है. मुझ में खामियां हैं और बहुत हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं है. मुझ में ये हक कभी भी नहीं है कि मैं आपकी खामियों पे उंगली उठाऊं. वो आपकी जुस्तजू है. बिल्कुल. ठीक है, वो आप पे छोड़ दिया. सूरह काफरून का यही है ना, यही है. बिल्कुल. क्या वो तुम्हारा रास्ता, ये मेरा रास्ता, राइट? बिल्कुल. राइट. ओके, एंड टॉलरेंस. एग्जैक्टली. जब हमने यहाँ तक कह दिया दूसरे कलमे में कि मैं अल्लाह पे, उसके सारे फरिश्तों पे, उसके सारे रसूलों पे ईमान लाता हूँ, तो फिर हमें नफरत कहाँ से आई? हमें से फ़िरक़ाबाज़ी कहाँ से आई? हमें, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक देयर इज मतलब ये इतनी कॉमन सेंस की बात है कि समझ नहीं आती कि इस पे हम लड़ रहे हैं यार. नहीं, उसकी एक वजह भी है. उसकी मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर द मुस्लिम बेल्ट, वी हैव द लोवेस्ट लिटरेसी रेट्स. 300 साल पीछे है ना यार वो जो. और जब आपका इतने लिटरेसी रेट, हमने रोक दी थी. वही ना, जब इतना आपका लिटरेसी रेट लो होगा, आप किसी गांव में जाओगे, वहाँ पे बच्चे को वो इमाम के पास या मस्जिद के पास ज़रूर भेज देगा,
वो सब ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो उनको मिलेगी वो वहाँ से मिलेगी, दे हैव नो वे टू वेरीफाई इट, दे हैव नो वे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम गलत कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दे हैव नो वे टू वेरीफाई। ये भी नहीं पता ना कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। हम अरबी में ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या नहीं जा, यू नो, आई मीन लेयर्स हैं जहाँ पे हम लोग, आई फील कि हम लोग वी आर नॉट, आई मीन स्टेट ने बहुत हमें मायूस किया है, ये सारी चीज़ें, ये तो हक था लोगों का कि उन्हें सही तालीम, और हमारा यहाँ पे अपना पूरा बजट ही उल्टा है। आप प्राइमरी के एजुकेशन पे सबसे कम पैसा लगाते हो, या ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पे जाता है, हायर एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे जाता है जो अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। और फिर आप कहते हो कि क्यों अमीर लोग हमें रूल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि पढ़ते ही वो हैं। पढ़ते ही, और डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ पे बैठ के जरूर, आई नो पीपल, आप देखो सच्ची बात है, एटम बॉम्ब शाम जो वो सब आपने बना देखो लिया, छोटी छोटी बातें, लेकिन तालीम ही नहीं है तो तालीम ही नहीं है, कोई फायदा कोई फायदा नहीं। आप तो जब तक आप वो नहीं उठाओगे तो फिर वो लोग जो है, अगेन मैं उनको कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वेरीफाई नहीं कर सकते वो किसी चीज़ को, तो जब उनको कोई सजेशन मिलेगी या और ये सिर्फ इस्लाम के हवाले से नहीं कह रहा है, कोई भी पॉलिटिकल के तो जब वो वेरीफाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को और उनको किसी चीज़ का वसूख से कहेंगे तो वो मान जाएंगे, यू नो। तो ये बहुत बड़ी, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस। फरहान, अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? एजुकेशन, है ना, एजुकेशन। वो क्या है, क्या आई थिंक इस मुल्क में ना एजुकेशन इमरजेंसी लगने का टाइम आ गया है, बहुत पहले से बहुत पहले से लगी। हम लोगों को ये छोड़ देना है, खुदा की कसम, मैं देखता हूँ कई बोर्ड मैंने देखे एक दो दफ़ा कि आपको 6 महीने में अमेरिकन एक्सेंट सिखा देंगे। भाई अमेरिकन एक्सेंट सीखना नहीं, तालीम नहीं है, वो तालीम नहीं है, यू नो, वो एक हुर है, एक हुनर है, या और कुछ भी नहीं है, गुर है वो। आप बिल्कुल, तालीम नहीं है। क्या लोग बदल सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर लोग नहीं बदल सकते तो फिर हम इस जिंदगी का क्या फायदा है? बट डू दे चेंज? I think people are capable of changing if we can open our hearts and souls and be ready to accept change. People can change. People should be able to change. I think there's a reformative quality in all of us. That's what religion is. It's constantly telling you that you can reform. It's okay. Yeah. You've made mistakes. Let those mistakes go. Don't turn them into a pattern. Move away from them. Right. So I think it would be arrogant of me, or it would be really negative of me to say that humans cannot change. I think people are capable of beautiful things, even though they have done some terrible things, and they can do both. कौन सी ऐसी चीज़ है which you can never forgive? कि नहीं है, this is something. Personal disrespect. Never give it, never take it. छोड़ देते हो, मुड़ के नहीं दोबारा देखते। और मेरे लिए once that happens, there's a sharp line. वहाँ तक I'm fine. उसके बाद मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है. I'm really insignificant. You and I mutually exist on this earth. That's it. I walk away. That's it. अच्छा, कुछ words हैं जो word आता है उससे ज़हन में. Feminism. So feminism to me is my personal history with feminism. See, if you look at it, my great grandmother was the first editor and the publisher of the first magazine for women in then India, which was in 1897. Okay, my grandmother, both sides. My one grandmother was a writer and the first female pilot of the British Empire. Right, not a fighter pilot, but a regular pilot. My other grandmother was in the first batch of lady doctors, female doctors, that came out. My mother had a radio program, for 30 some years. She was so to me, this idea of feminism is part of my DNA. You were born into it. Yeah, I mean they are strong
confident Women people, around you. people, right? And you know, and by the same token, the men in the house have their own strengths. Yeah. So I think. But आपके parents का जो relationship, because I have seen them together. नईम अंकल दबते थे थोड़ा आंटी। हाँ वो उनका नखरा था, ऊपर से बड़े बनते थे लेकिन अंदर से हाँ वो था उनका। But लेकिन but that was a mutual thing. There's a chemistry between them. लेकिन to me feminism, you know, I think of that. I have a daughter. Yeah. You know, so I see it. I see all layers of it. I work with a lot of women, and the industry that we are in, it's a very difficult industry. For men, yes, in our own challenges. For women, in their own challenges. So I see the struggle, and to me, if I could recreate this part of it, I would never. I mean, we should be so equal that this should not even be an issue. A word. Exactly. Yeah. Exactly. Democracy. Democracy is tricky. Democracy is messy. Democracy is based on definition. We have democracies in Pakistan, but those democracies to me are a little skewed. For example, we have monarchical democracies that, you know, so-and-so's father or son or daughter or whoever can then take over the party and we must vote for that person. That's one. So how do we find the true talent or the true merit of a person when you're getting the inherited that? By the same token, when somebody runs for a seat from a village, people know where their butter, where the bread is being buttered. So there's a very different kind of democracy. If you look at the American democracy, it's in shambles. It is. It is in shambles because of its own issues. You know, there are issues with term limits. There's issues with you know, corruption. There's a lot of things. So I was a student of economics and politics. So as a idea, democracy is great. It's actually very Islamic in a way. It's very Islamic, right? But that's the pure democracy. The democracies that we see in this world, by the same token, we don't see the true communism or socialism either, but democracy is now a very muddy field. It still needs some evolving. There are some great positives of it. You know, freedom of speech, freedom of press, all of that. Which again, because democracy, it's a different. But there's some great things about it. Nationalism. Look, nationalism. There's patriotism and there's nationalism. Okay. When your nationalism makes you feel superior than others, like Trump idea, then you're in trouble. To be proud of who you are, and to celebrate that pride is something that I love. I like it. You know, that's why I say let's make Urdu cool, because I think that there's something beautiful about it to be able to say, I speak this other language and I really know what the language is all about. Right? So that's pride. That's that kind of patriotism of, like, agar mujhse koi Pakistan ki politics ke बारे में पूछेगा, that's my national side to it. That I can. लेकिन अगर मुझे मेरी कोई पाकिस्तान पे कोई तोहमत उठाएगा of the people that we are, that I won't take. मतलब आप भी जो मर्जी कह लीजिए, ओवर ना कहे. No. Capitalism. Capitalism is as flawed as the communist economic model or the socialist economic model. It's very. लेकिन हम evolve हुए हैं यार इसमें. हाँ, क्योंकि हमें वो कर दिया ना, उसको confuse कर दिया. It's become part of what. वो हमने उसको confuse कर दिया democracy के साथ. You know, freedom of speech, therefore freedom of this and freedom of that. There is a fine line. When you have that freedom, then you also have a responsibility to use that freedom in the best way. Yeah. So if you're not doing that, capitalism has taken it, to be very honest, with, you know, आपका credit card ले लो यार, उस पे आप you have $1,000, उसके ऊपर वो $120 की वो interest लगा देंगे. That's capitalism now. Yeah. आप सारी उम्र interest ही pay करते रहोगे. बस
गए, हम फंस गए. ये सबसे बड़ा, मेरा ख्याल सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि how do you release some of these things out of your system? What is important to you? And what is success for you? Success to me is respect of the work that I do. Okay. ठीक है. I'm not and will never be like, I'm not one of those that कि यार क्या हर चीज में गोल नहीं. I've done some really stupid things. Stupid in the sense that I didn't feel like that they were great. So I know कि वो किया है. ठीक है. To me, success is a body of work. Okay. I've been very fortunate, as I said. I did be on stage. I did on Broadway. I did Kite Runner, right, for 5 months, 6 months. I love that book. Okay? Yeah. So we did that. That's success to me, to be able to bring that story to the larger audience. Wow. And, so which role did you play? The Baba. Oh. Yeah. Which is a really great role because the puri journey jo hai, it's a beautiful. But to have, if you're doing it on Broadway, you have a 1,000 to 1,200 seater, which was filled every night. We got a standing ovation every night. That is success. So that's to me success, right? Usi tarah, to be able to like take my stab at like, to be able to play Othello or Richard III or Macbeth, to me, that's great to me. And to be able to do like different kinds of roles, that's success to me. It is. For an actor, it is. Yeah. I mean, that's my, other people engage it by money or whatever, or aap kitne followers hain, that's their thing. To me, this is my success. I don't really care. Agar log hain followers ya mere paise zyada hain to bahut achhi baat hai. Nahi hai to that's not my gauge. की कर सकते हैं फिर. अच्छा फरहान, आपका अपना फेवरेट रोल आज तक कौन सा है? If I tell you to choose one. So I'll give you 2 answers to that. So एक मेरा answer which is true answer कि मैं जो भी रोल लास्ट करता हूँ ना, that has to be my favorite वो इसलिए because if given whatever my circumstance was, if I didn't give all that I had to that role, तो फिर मैं उस रोल के साथ नाइंसाफी की और अपने साथ नाइंसाफी की है. ठीक है. So that to me is that's always my favorite role, क्योंकि अच्छा हो बुरा हो जो भी, जो सबसे चैलेंजिंग रोल्स हैं वो ज़्यादातर स्टेज के होते हैं. क्योंकि आप you start with A and you go to Z. एक दफ़ा जब बत्ती जल गई तो फिर बत्ती जल गई और फिर बच्चों आप ही हो. वो स्टेज पे कुछ भी हो जाए, आप गिर जाओ, पिट जाओ, कुछ हो जाए, आपको किसी तरह उसमें से निकलना है. सो दैट्स वेरी चैलेंजिंग. फिल्म टेलीविजन में ये है कि हाँ, आपको वो कैफियत जो है शायद ये हो कि यू हैव लाइक आपने एक चीज़ की 7 या 8 टेक्स कराई, तो वो कैफियत आपको रखनी है. लेकिन फरहान ये बात है ना कि आप अपनी फिल्म खुद भी देख सकते हो. ठीक है. तो और आप कट भी कह सकते हो. इज योर फेवरेट? सो माय फेवरेट इज, आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स वर शेक्सपियर रोल्स फॉर मी. Othello was a very challenging role. Richard III is a very challenging role. I just did Macbeth. These are theatre. These are theatre. मुझे मूवी बताओ या कोई सीरीज बताओ. I just did one which is coming out called Coup. Okay. Which is good, which is set in 1918 during the Spanish flu in New York. Wow. It was a very you'll see he's very teddy bearish kind of a guy. He is an old Turkish musician जो अमेरिका आ गया है, and he ends up being somebody's driver, right? So it's basically a coup of the servants against the higher class. So it wasn't like a बहुत character का वो था, लेकिन it was one of those really kind of, you had to find a very different kind of an access to him. Wow. So that was very interesting. So that's a series? No, that's a movie. It went to Venice Film Festival, won there. It's about to be released. That's an interesting. I did the film that I did with Kavi Uncle. I'll meet you there. यहाँ पे बैन हो गई थी. Why? उस पर कोई 1980 की literally 1980 की दफा लगाई उन्होंने कोई कि ये this is against. What was it about? It was about 3 generations. एक बाप है जो मैं प्ले करता हूँ, इस शिकागो कॉप जो अपनी बेटी को रेज कर रहा है. माँ मर चुकी भी है. बेटी को डांस का शौक है. Okay. बाप ये कहता है कि कुछ भी करो, कथक नहीं करना. Okay. Something you get revealed, it gets revealed in the movie, right? Okay. कथक नहीं करना. लड़की जो है वो they have a very open relationship, the two of them. 2 ही हैं बेचारे, and they like they tease each other and they are very open with each other हर चीज़ में.
वो है। तो एक दिन वो बाप जो है वो कॉर्नर एक टर्न द कॉर्नर एंड सीज के दूर कहीं एक सूटकेस पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। सो एज ही गेट्स क्लोजर ही सीज कि ये तो इसका बाप है। और 12 साल से ये बाप और ये बेटा जो है दे बीन estranged, they haven't talked। और एक दिन इन द मिडल ऑफ एक दोपहर भरी दोपहर में वो घर आ रहा है तो बाप जो है वो सूटकेस पे शिकागो में उसके घर के सामने बैठा हुआ है। सो बेसिकली इट्स द स्ट्रगल ऑफ 3 generations। बाप जो है वो कंजर्वेटिव पाकिस्तानी बाप है, बेटी जो वो डांस में बहुत शौक है, बाप जो मैं जो हूँ ही इज़ लाइक ट्राइंग टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज things. It was a really, I thought was really challenging in the sense that to bring that American and the Pakistani side and keep it true. बैन क्यों हुई? ये मुझे भी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि जी हम लोग we are being un-Islamic. I think that had to do with the dance part of it. That's what I heard. और जो दफा उन्होंने कथक करते हैं सब करता है यार, यहाँ पे आइटम नंबर तो सब देख लेते हैं। मतलब जब हम करें कुछ भी देख लेते हाँ हैं। वो तो सब देख लेते हैं, लेकिन हम करें कुछ तो कि बेटी यू नो। और उसमें कुछ चीज़ें थी वेयर शी क्वेश्चंस एंड आई गिव हर आंसर्स अबाउट इवन कि इस्लाम सबके ज़हन में ठीक है, ये आंसर्स है, बच्चों के ज़हन में आता है और उनको आना चाहिए। हाँ। ये तो दीन और में मत डरो। और ये तो दीन में कि क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा Clarity दीन आएगी। मजबूत होगा। Yeah। तो लेट देम क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट क्वेश्चन गॉड, दे जस्ट आस्किंग कि ये क्या है, यू नो व्हाई नॉट। एनीवे तो उन्होंने वो हम पे 1900 दफ़ा की खुदा की कसम मेरे पास पड़ा हुआ है, वो 1980 की एक दफ़ा लगाई है। What is the name of the film? I'll meet you there। चलो मैं ढूंढूंगी। तो मतलब तो वो that I thought was a good role। अभी मैंने किया है which I think is also a good one। वो 26 को खुलेगी लंदन फिल्म फेस्टिवल में, पेपर फ्लावर्स। I play a father of a young boy 22 dying of cancer, right? So I mean we can both understand that so that was a cool role। I think some of the I actually thought like some of my roles which people mostly know me by are the bad boys, Yeah। and I think there's something beautiful about them। I think there is a देखो you need वही बात है कि जो नेगेटिव रोल्स होते हैं या बैड बॉय रोल्स होते हैं दे आर मोर वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स एक्चुअली। उसके बगैर क्योंकि सारा कुछ है ही उसमें उसी अगर आपका विलन या आपका बैड बॉय जो है वो कमजोर है ना, कमजोर है तो आपको पहले ही पता है कि ये तो मर ही जाना, इसको तो एक मुक्का पड़ेगा तो उड़ जाएगा। एग्जैक्टली राइट। यू नीड, अब आप जो जेम्स बॉन्ड देखते हो तो पहली बात आप क्या पूछते हो, हु इज द विलन दिस टाइम, राइट। और आप सुपर हीरो की मूवी देखते हो आपको पता ही है कि उसने पिट ही जाना है इन दी एंड, लेकिन वो ही शुड गिव मतलब पैसे तो पूरे करो ना, पैसे तो पूरे दो। Anyway. I love those roles. I love those roles, and they're very freeing. आपको नहीं फिक्र कि your job is that if people hate you the most, then you've done your job. But उसमें there needs to be a pull. There needs to be a pull in that. So I love those. I love those. I'm so glad that you're so into it and you can talk hours about Oh this, God, yes. you know. Oh God, yes. मतलब मुझे कोई और सवाल तुमसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। क्योंकि मैंने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए। But I really wish all the best for Umro यार, and I really want कि इतनी बड़ी हो जाए। I hope yeah. कि really we see you more here in Pakistan and फिर देखो we are trying it's opening in 500 theaters across the world on the same day. Wow. So we are trying। अब मैं बार ये मिसाल मैंने हर इंटरव्यू में दी, अब भी दे दूंगा कि हमें एक चैलेंज था, वो ये था कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती। हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वी हैव ट्राइड टू डू द बिकॉज़ मौला जट भी एक फैंटेसी वर्ल्ड है ना। हाँ, वो फैंटेसी, तो वो एक बार तो है और मौला जट जो है वो एक और किस्म की फैंटेसी, बिकॉज दैट रेफरेंस इज ओनली 70s and 80s, राइट। वो अब की बात है, दिस इज समथिंग एल्स। मैं जो मिसाल जो कहावत एक है ना हमारी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मैं बार ये कहता हूँ हमने तो मोर को नचा दिया। अब प्लीज आके देख लो, अब देख लो अब आके देख लो। Thank you so much Faran. Thank you for having me. Lovely talking it was to such you. a beautiful, wonderful All time. the best. Thank you. और इसके साथ ही मुझे इजाजत है, फिल्म देखने जाना है आपने क्योंकि मैं तो जा रही हूँ, और लेट्स मेक इट बिग, लेट्स मेक उम्रो यार दुनिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर। See you next week with some another guest. खुदा हाफिज। Say it all
with Iffat Omar.